What is the best team you've worked on and why? I think every time, I've always had a great team. I'm a firm believer in collaboration, since we are talking about collaboration, because I think individually you can be and you can survive, but if you want to really build something, there needs to be collaboration. Because collaboration is very handy. I might make a film, and a lot of people say it's just my film. But I have always believed that as a filmmaker, I'm in a very different zone as compared to others, because when a film works, then the credit goes to the entire team. But when it fails, it is only the director, because only he had the power to say no. And the points that he does not say no is where his failures lie. Things that he did not stand up and say, no, this doesn't work. So as a filmmaker, I'm in a very privileged position of saying yes or no, whereas a whole lot of people are working all the time. I would not know how to constantly work on the exposure of a camera, to know the way I'm imagining and seeing things with my naked eye is being captured or not. I depend on my cameraman. And I have to, like he said, I have to trust him. When he says, it's fine, I need to trust him that it's fine. I can't let my insecurity also bog him down. I need to trust my production designer. When I give them the brief, and I need to be open to them. I need to share it with them. With actors, I have this very strong bond of trust. My actors trust me so much that they would do anything for me, because they have this faith back in me that I would not let them fall. So I can literally ask them to jump from a place and they know nothing will happen to them because there's a trust. I'm saying without those trust and those bonds, we can't really make a film. It might originate from me as an idea, but for it to fortify, for it to become something, I need a team. And I've always handpicked my team. And like I said, it's very important that the team gets along with you. And I always pick up people who I think are better than me. I never try to be the one who's always the best on the set. All my ADs turn out to be better filmmakers. All my team members, they turn out to be better viewers. I can't have yes men around me. So it always works very well. That's an interesting point about yes men, because very often after you've reached a certain stage, people are incentivized to make you feel like whatever you're doing is correct. But sometimes the stakes get really, really high. And as the stakes get higher, in fact, you get more and more yes men around you. How do you sort of cut through that? No, I think I've been very lucky compared to a lot of other people, because my career began with a series of failures. And I think failure is a much better teacher than anything else. I have learned a lot from people I admire very much what not to do. And so I have to figure out as I go along what to do in life. But I've always learned from others what not to do. And I always have learned from failure, because it has one primary thing that it has taught me is not to be insecure. I'm saying when you're really thinking to break a boundary, then you must go out and break a boundary. Because unless you don't do that, you won't realize that whether you have achieved something or not. So first you go all out there, and then you see that and you learn from it. Because it's a constant journey. I really genuinely feel it's a constant journey. I still feel very jealous of very good filmmakers, and the first thing I do is I seek their friendship. Anybody I'm jealous of, I seek their friendship and I learn from them. And they're like very young filmmakers that I always surround myself with. And that I think keeps me very alive. And all this I have learned from all my filmmakers that I used to work with earlier. Where, when I came into the industry, people were full of selves. And they would not, everything was about, it's my film. And it never really becomes a collaborative thing. And a lot of filmmakers would make their films through someone else. So I've learned from all that. And I'm still learning. I still make mistakes. Great. Thank you. Gaurav, musician, the only musician over here. Tell us a little bit about how you're putting together the Blenders Pride fashion tour, and the sensibility that you're weaving in, given this theme. Who are the kinds of people you're bringing in, and why? Well, I get to do this every year. So every year I try and... Discussion, I haven't moved an inch from this corner over here. Thank you so much, Che. Thank you so much, designers, collaborators, style blenders.
ब्लेंडेड स्प्राइट फैशन टूर हो रहा है, जो कि स्टाइल जो है आपके अंदर से आती है, और वो मेरा बहुत सब तरीके से मानता भी हूँ, क्योंकि बहुत समय से मैंने भी देखा है कि हम लोग हमेशा जो है किसी और की नकल करने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ और बनने की कोशिश करते रहते हैं, और हमें समझ नहीं आता क्या गलत हो रहा है। जब एक दिन पता चलता है कि आपके अंदर जो है वही है जो बिकता है, वही है जो लोगों को पसंद है, तो और वो कहीं ना कहीं ब्लेंडेड स्प्राइट के साथ अच्छे से ब्लेंड होता है, इसलिए उनके साथ जुड़े हम। मैं तो वैसे जनरली अगर आप देखेंगे, रोज मैं जब काम के लिए जाता हूँ तो मैं तो वो वाला आदमी जो शेल्फ में सबसे ऊपर जो पड़ा होता है वो उठा के पहन लेता हूँ टी शर्ट, और नॉर्मली मैं जीन्स पहनता हूँ, जैकेट पहनता हूँ, टी शर्ट पहनता हूँ, आपने देखा है मुझे तो। और मैं बहुत ही शौक है मुझे जूतों का, तो मुझे शौक है जैकेट्स का, तो जब भी शौक पूरा करने का मौका मिलता है पूरा करता हूँ। अच्छा है, मैं तो पहले बहुत खुश हूँ कि ब्लेंडेड स्प्राइट के लिए इधर आके आई मेट विश्वनाथन आनंद जैसे दिग्गज से मुलाकात हुई, ऐसे आदमी से जिसे कभी ऐसी हस्ती जिनसे कभी आप मिल नहीं सकते हो, और इतने सारे डिज़ाइनर से मिले, और यहाँ पे आके अच्छा लगा, बिकॉज कहीं भी कोई चीज़ हावी नहीं थी आपके ऊपर, और आपके बारे में थी, और आपके अंदर के स्टाइल के बारे में थी, आपके पर्सनालिटी के बारे में थी, तो अच्छा लगा मुझे। मैं तो अपने कपड़े डिज़ाइनर्स ऐसे नहीं होते कि एक पूरा डिज़ाइन आप जो किसी आप अपना डिज़ाइन खुद बनाते हो, दूसरों के सबसे कुछ ना कुछ लेके, तो मेरा तो हमेशा ऐसा फिल्टर रहता है कि आपने सबसे कुछ ना कुछ लिया, और जो बनाया वो आपका अपना खुद का कॉम्प्लीट। मैं पहली बार इतने एक साथ देखे। मैं किसी इंडिविजुअल डिज़ाइनर को तो ऐसे नहीं देखता, मैं तो डिज़ाइनर्स काफ़ी पसंद है, बहुत सारे पसंद है, और उनसे मैं अलग अलग लोगों से लेकर के जो है अपना खुद का मिक्स एंड मैच करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मेरे को जो करने का मन है, जो मैं करना चाहता हूँ मैं लाइफ में, वो कर रहा हूँ, वो हमेशा अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लगता है। ब्लेंडेड स्प्राइट के बारे में जानना चाहेंगे, क्या क्या खास रहेगा इस बार, किस तरह के कॉस्ट्यूम देखने मिलेंगे आपकी तरफ से, किस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं? ब्लेंडेड स्प्राइट के साथ में ये मेरी 11वीं साल है, और बहुत ही अच्छा लगता है, कोलैबोरेशन बहुत ही उम्दा तरीके से होता है, और ब्लेंडेड स्प्राइट की हमेशा खासियत ये रहती है कि ग्लैमर के साथ लाइफस्टाइल क्वोशेंट, और जो कलेक्शन प्रोजेक्ट करने को मिलता है वो बहुत ही ग्लैमरस कलेक्शन होता है, और बहुत सारी सिटीज़ में जाते हैं, और बहुत सारी सिटीज़ में शोकेस होते हैं कपड़े, तो एक बहुत ही इमेंस एक्सपोजर पैन इंडिया मिलता है। और मेरे ख्याल से इस बार की जो मेरी कलेक्शन है वो इट्स प्रेडोमिनेंटली विद ब्लैक एंड वाइट, एंड इट इज़ अबाउट यू विच इज़ एमिंग एट द वुमन हु इज़ a part of a semicircle to the entire circle of life, without whom the circle of life is not complete. और इसको लेके जो कलेक्शन मैंने बनाई है वो उस वुमन पे आधारित है जो काम करती है, जो हाउसवाइफ है, और जो हर एक चीज़ को एक बैलेंस देने की कोशिश करती है, उस पर ये कलेक्शन आधारित है। जैसे आपने बताया कि श्रीदेवी से आप काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो क्या श्रीदेवी आपकी आइडल भी है कलर्स एंड फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? डेफिनेटली शी इज़ माई आइडल, एंड उनसे मैंने बहुत ही सीखा है, क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मेरी पहली ही क्लाइंट थी श्रीदेवी, और एज अ डिज़ाइन स्टूडेंट बहुत ही मुझे उनसे जानकारी मिली।